Okay, when you ask them something, when you're trying to know them, or when you're trying to perceive them, as I said, psyche, जैसे उनका question था कि denial is good, psyche has made it very economical by creating certain boxes and categories in our mind. So what we do is that we when we meet somebody, start to perceive somebody, get some initial clues, ठीक है? और वो सिर्फ first clues हमें चाहिए होते हैं, वो क्यों चाहिए होते हैं? So that we can put that person in a box, in a category, ठीक है? And that is very easy for us. सही है? You with me? One of the most common clues that we look for is the status and goals. Okay जी, क्या करते हैं आप? ठीक है? What is your job? Okay, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट. Okay, अच्छा अब स्टेटस सिंबल्स देखते हैं, आपको घड़ी कैसी पहनी, कपड़े कैसे पहने, गाड़ी कैसे, थोड़ी सी चीजें लेके ओके एक अमीर डॉक्टर एक कैटेगरी में डाल दिया और बाकी आपके पास जो प्रायर जितना नॉलेज है अमीर उसके हिसाब से उसको परसीव कर लिया. ठीक है? You have a prior knowledge of rich doctors. ठीक है? The key learning point is we perceive very little. In social settings, we perceive very little. We're looking for some initial cues so that we can put a person in a box, in a category. Now, I want you to listen very carefully. I'm going to go slowly. इसलिए मैंने आपको थोड़ा break से जल्दी बुलाया. I'm sorry for that. But because these things are very interlinked, lots of my students, जैसे वो reinforcement की बात थी, get very confused कि सर ये क्या है? These things are overlapping. So we perceive very little, and it's a glitch. It's a software glitch of our irrationality. ठीक है? Every human being is unique. So don't rely on some initial cues because your psyche would force you to do it. Make an effort not to do it. And he quotes in his book, I think it was Age of Unreason, an experiment that he ran, in which in a social setting, उसने अपना जो स्टूडेंट था, जो जिस पर रिसर्च एजेंट था, वो अंदर गया और उसने कहा उसको बताओ डॉक्टर फैसल. अच्छा उसने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है कि आप लोगों से मिले ना, यू ओनली हैव टू से पीपल गौर करें. दिस इज द क्वेश्चन यू ऑफन आस्क, अच्छा जी आप क्या करते हैं? ठीक है? सो उसने कहा कि यू हैव टू से व्हेनेवर समबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन यू हैव टू से नथिंग. I don't do anything. So when he was moving around, he met people. People, oh hello, what do you do? He said nothing. Okay, so you live off your inheritance. Have your parents left something? No. Okay, so are you self-employed? No. But what actually you do? Nothing. Rationally speaking, I mean there are people who don't do nothing. People actually got quite irritated with this guy. You know, why? Because this person was not giving them the initial clues so that they can put him in a box, in a category, in a balkanization. इसको यहाँ डालना है. Okay? So the key learning point of question is we perceive very little, which is a software glitch in human psyche to put people in boxes because it's easy on the psyche. So this is the first thing. Excuse me, sir. Sir, saying that I do nothing, so that also creates a box in the mind of the other people, right? Yeah, but they were. I mean, of course, उसका क्या हुआ होगा कि यार ये कोई abnormal आदमी है. Exactly. मतलब उसको फिर एक label. We label क्या? We label people. We need labels. ठीक है ना? Personality का हमने session again because of the constraint. Personality for layman, personality is what? A label. Shy, aggressive. one personality को एक word से describe करते हैं. How would you describe that person's personality? Very initiative, very aggressive, very cold, very warm, very outward, very inward. So we need labels. So ultimately they came up with a label,
But in the process they got irritated because usually in a social setting you immediately provide clues. Okay. अच्छा जी आप क्या करते हैं, हाँ जी आजकल मैं भी हूँ, अच्छा बेहतरीन हो गया, सही है. सो नॉर्मल सेटिंग में अच्छा जी ओके बच्चे क्या कर रहे हैं, सो वही 4-5 चीज़ें टिपिकल. ईस्ट में थोड़ी सी बच्चों का ऐड कर देंगे, शादी हुई है नहीं हुई है, तो 4-5 चीज़ें. अच्छा ओके यार ये तो इटर्नल बैचलर ये वो ठीक है, वो उससे रिलेटेड सारी बातें कि जी इसमें वो सारे मसाइल होंगे. एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. सो yes, they ultimately got to the conclusion, but in the process they got a bit irritated with the guy because he was not readily providing with them with those sensory clues. Attribution and appraisal. Now this is very important. I should have suggested Red Bull in the break so that you're alert, should wake up from the slumber, whatever it is happening to this class. Please ask questions. We're moving towards attribution. Relax. दिमाग खोल के ठंडे रहें. Keep listening. You will hopefully understand. What is attribution? Attribution is a perceptual process whereby your perception searches for causality, for the cause of another person's behavior. It's attribution is the perceptual process of searching for causes, for the causality of a person's behavior. Okay? So I asked him a question and he said something. So my perceptual attribution process kicked in and I searched for the causes. कि इसके behavior का cause क्या है, reason क्या है? हाँ? You might be thinking about someone else. वो आगे आते हैं. यहाँ तक clear है? So this is the attribution, perceptual attribution process. Now, there are two types of attributions. Dispositional attribution. What is dispositional attribution? That the cause of this person's behavior is in his or her personality, in his or her ability, in his or her motivation. Okay? The cause is in you. ठीक है? ये क्या है? कौन सी attribution है? Dispositional attribution. Where the second form of attribution is situational attribution. A situational attribution is that the cause of the person's behavior is in the situation, is in the ecology, is in the team, is in the equipment, is in the leadership. जो कि बाहर की चीज है, not in the person's disposition, but in the person's situation. यहाँ तक सब मेरे साथ है? Attribution is the search for the causes perceptually for a person's behavior in a social setup, and we can do it via two ways: dispositionally or situationally. Okay. Okay. आप बंदे के बिहेवियर का कॉज बंदे की पर्सनैलिटी, बंदे के अंदर देखेंगे इसकी पर्सनैलिटी में है, इसकी एबिलिटी में है, इसकी मोटिवेशन में है, इसकी पर्सनल डिस्पोजिशन में है. अभी क्लियर? फर्स्ट करो, ठीक है? आप 4 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, 1 साल से आप सब 11 लोगों को दोस्त हो, ठीक है? वो आपकी मैनेजर है, वो आई है और वो उनको लेके आई है. ये आपकी नई टीम मेंबर है. आप मीटिंग कर रहे थे, आपने कहा ओके मैनेजर थैंक यू वेरी मच, टीम मेंबर आ गई, ठीक है? अब आपकी जो मीटिंग थी वो घंटे की थी, उस सारी घंटे की मीटिंग में चुप रहे, मीटिंग एडजर्न. अब इनकी जो खामोशी का बिहेवियर है, इसको आप कैसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं? डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन वुड बी, कैन आई यूज यू एज मे बी शी इज शाय, की पर्सनालिटी, मे बी शी इज इनकॉम्पिटेंट,
नलायक है, कुछ आता नहीं, बोली नहीं, ये डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है। ही माइट थिंक नई सिचुएशन, नए लोग थे, शी वाज थिंकिंग कि क्या लोग करते हैं, यहाँ पे काम कैसे होता है, ठीक है, नॉवल एनवायरनमेंट थी, ठीक है, जो इनके साथ हुआ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इनकी खामोशी की, इनके खामोश बिहेवियर की वजह, रीजन, कॉज वाज सिचुएशन। So if you say that, you are making situational attribution. But if you put it in her shyness, in her incompetence, that is clear? Personality है, motivation है, ability है, personal disposition है, stereotypes भी होते हैं। आगे इसमें ये overlap करेंगी सारी चीजें, ठीक है। अगर लेट्स से खातून है तो आप कहते हैं कि जी चुप है इसकी औरत है, ये स्टीरियोटाइप है, सारी औरतें खामोश हैं, शायद, ठीक है, जो काफी चीज़ है। Sir, these two come at the same time. Like, it's possible these two. अब आते हैं आगे। ये जो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, होता क्या है, मैंने जो पहले डिस्कस किया हुआ जिस चीज को कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है? कि whenever somebody else, जब किसी और की बात होती है ना, तो you immediately jump to which kind of attribution? फंडामेंटल। ये निकम्मा है, ये नालायक है, इसको आता कुछ नहीं है, ये है इनकॉम्पिटेंट है, ये है। जब किसी और का मसला हो ना, जब आप किसी we are all judges by the way, हमारे हम में से हर एक के अंदर एक मौलवी, एक जज बैठा हुआ है, एक मुफ्ती बैठा हुआ है, ठीक है ना। जब आप किसी और की बिहेवियर की एट्रीब्यूशन या कॉज़ैलिटी के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो आप इमीडिएटली डिस्पोजिशन पे जंप करते हैं। We have again a glitch of when it comes to another person to overlook situation, ठीक है, क्योंकि यार ये खुद ही नालायक है, ये खुद ही शाय है, यार इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये निकम्मा है, यार इसमें मोटिवेशन नहीं। When it comes to yourself, you immediately jump to टीम ठीक नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं मिली, मुझे ट्रेन नहीं किया गया, मेरा लीडर ठीक नहीं था। जो मैंने आपको फेमस एग्जांपल दी क्रिकेट की है, इन ज़िमामुल हक, रिमेंबर, whenever we used to win, okay, the boys did very well. Whenever we lose, okay, the pitch was bad, the umpiring was biased, the crowd was this and that. इसको कहते हैं, केली का आर्गुमेंट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप में से सब लोग यहाँ तो खुद करेंगे या लोगों को सिखाएंगे एक चीज जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। सुना है नाम? Yes, sir. अप्रेजल में इट्स अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक ऑफ इमीडिएटली जंपिंग, ठीक है, टू डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। सफाइस टू से कि एट दिस स्टेज इतना याद रखें, first ensure when you are appraising somebody's performance, first ensure that all the situational areas were correct, and then come to disposition. And you have to make an effort because again fundamental attribution error के हिसाब से हमारे में tendency है not to do it. So ensure क्या सारी equipment थी इसके पास, क्या working condition ठीक थी, overcrowded जगह तो नहीं थी, training provided थी, टीम ठीक थी, इसको टीम तो नहीं हरास कर रही थी, इसको टीम ने नेसेसरी मदद फराहम की। Okay, or if all that is right, then you can ask the person, okay, why didn't you perform? Instead, maybe, okay, you didn't perform, maybe उसके पास equipment ही नहीं थी, necessary training ही नहीं, ठीक है, टीम वर्कर्स उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। So, अब इसमें I can go on and on and on. अप्रेजल का मतलब क्या हुआ है? परफॉर्मेंस अप्रेजल के आपका एक 6 मंथली 3 मंथली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ईयरली आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, जिसको कहते हैं ACR परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके लिए लफ्ज़ है प्रॉपर, ठीक है जी। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस यूज द वर्ड, जिसमें 360 अप्रेजल आपने सुना होगा, ठीक है, 2 वे अप्रेजल सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन ACR का लफ्ज़ सरकारी फौजी में होता है, वो साल के बाद क्या आपने परफॉर्मेंस की है नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। Excuse me, sir, why are you focusing on negative behavior only? Because I think if someone is doing good, then ये भी होता है ना बेटा, देखो ये अब it's a very good question. If somebody has performed well, बाज़ का there is a bias कि जी okay, you can immediately jump
ठीक है, of rating him very well. While it might be that he was working with a new technology, he received a lot of resources and support. So दोनों जगह से आपको जब when you are appraising, of course अभी तो नहीं आप करोगे, शायद कभी ना करो जिंदगी में, लेकिन अगर आप करो तो आपको दोनों चीजें बैलेंस रखनी होगी, ठीक है। बात करने का मसला ये है कि सिचुएशन को पहले ड्यू डिलिजेंस लफ्ज सुने, पहले मैं इनका अप्रेजर कर रहा हूँ, मैं पहले पूरे इनके सिचुएशन वेरिएबल्स देखूंगा। अब उसमें कैली का एक पूरा डिटेल्ड मॉडल, ठीक है, हर चीज का, ठीक है, टीम, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, हर एरिया को जब मैंने देख लिया, ठीक है, कि इसको इतनी ट्रेनिंग मिली हुई थी, ये इसकी इतनी कॉम्पनसेशन है, इसका इतना टीम सपोर्ट है, इसका इतनी इंटरपर्सनल लिंकेजेस हो गए, अब वो मैं डिटेल्ड एचआर में जा रहा हूँ। जब वो सारे मैंने देख लिए, उसके बाद जो KLP, जो की लर्निंग पॉइंट अभी इस स्टेज पे आपको लेके जाना है कि डू नॉट जंप टू डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, फर्स्ट डू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा जाना चाह रहा था, देखो कि ये हमारे अंदर ये जो ग्लिच है ना, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मसला होता क्या है हमारा, हम क्यों जंप करते हैं डिस्पोजिशनल। हमारा जितना एथिक्स है, रिलीजन है, वो जो फ्री विल की बात हुई थी, लॉ है, ये बेस्ड है फ्री विल पे, इस चीज पे कि अ ह्यूमन पर्सन इज केपेबल ऑफ गुड और बैड, अच्छा और बुरा कर सकता है एक इंसान। साइंटिफिकली ये सच नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपके लिए बफर किए हुए हैं, जिम्बार्डो के प्रेसिडेंट एक्सपेरिमेंट, उसने कहा कि यार एक तो डिस्पोजिशन है, फिर एक चीज है सिचुएशन, ठीक है। हर इंसान, अब हम बिहेवियर, अच्छे और बुरे इंसान नहीं होते, अच्छी और बुरी सिचुएशन होती है, और बुरी सिचुएशन में हर बंदा बुरा बिहेव करेगा। और उससे थर्ड स्टेप है जिसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच, यानी कि जो सिचुएशंस हैं वो एक ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिकल और कल्चरल सिस्टम है। ये साइकोलॉजी में जो दो लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है, वो एक जिम्बार्डो का, फिलिप जिम्बार्डो का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ बफर हुआ है, और दूसरा मिलग्राम एक्सपेरिमेंट है। इसने किया क्या था, जस्ट टू गो क्विकली, इसने स्टैनफोर्ड में से स्टूडेंट्स को रैपिडली उठाया था, ये आपने पढ़ी होगी, देखिए। सो वो कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ गार्ड स्टार्टेड बिहेविंग, उन्होंने रोल साइंस भी ले लिया। अब इसकी नई बुक है जो लेटेस्ट अभी आई है, क्योंकि जिम्बार्डो को बुलाया गया था अबू गरीब प्रिजन। नाउ आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल हियर कि अबू गरीब प्रिजन में क्या हुआ, ठीक है, बिकॉज जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में उसने एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया था वो एक्चुअली हुआ, ठीक है। सो उसको बुलाया गया, हुआ क्या कि उसने कहा कि जी कुछ लोग लड़के यंग आपने उठाए, उनको आर्मी में भर्ती किया, ठीक है, उनको एक सिचुएशन में डाला। वो सिचुएशन क्या है, जेल रूम गार्ड एक और मुल्क में, अजीब सी, उनको कहा जा रहा है कि जी लोगों को मारो या उन पे, और एक ब्रॉडर सिस्टम जिसमें वॉर है, मुल्क से दूरी है, एक अस वर्सेस देम है, अरब से हेट है। इस सारी सिनेरियो में दे बिहेव्ड, नोबडी डिफेंडेड देयर बिहेवियर, बट दे सेड दैट जो डोनाल्ड रम्सफेल्ड की लाइन थी, देयर वर फ्यू बैड एप्पल्स। तो उसने कहा नो, इट्स नॉट अ केस ऑफ बैड एप्पल्स, it's a case of bad barrels, bad situations. So अब इस स्टडी को मैं इस आर्गुमेंट को बढ़ाता नहीं हूँ, ये बहुत, मैं जिम्बार्डो के जो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट पे वैसे एक सेशन करता हूँ जनरली, अगर आपके साथ भी मैं करूँगा कि पूरी इसकी क्या थी, आप इसको देखिएगा घर जाके, क्योंकि अभी आज टाइम नहीं है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट फिलिप जिम्बार्डो के, ठीक है, और दे प्रूव्ड this we have a tendency, the judge, internal judge, अच्छा बुरा नहीं, there are good and bad situations, and then there are good and bad overall systems in which these good or bad situations exist. Nobody's, I mean, I don't want to go into ethics and religion and law, but अगर आप experimentally देखें तो I mean nobody is a bad person really. Every crime that has been committed by every person has been a combination of bad genes, bad brought up, bad luck, or a combination of all three. Okay? It doesn't mean that you should release people. You go and you ask a serial rapist in a jail and
If we release you, what you're going to do, he's going to do the same thing again. So you have to imprison the person. But the argument here, कि, you know, tsunami kills people. If I ask you, before a tsunami comes, should you imprison it? If you can, you would. You would imprison the tsunami, but you won't consider it as evil. Human brains, especially from a behavior school and now scientific view, are more or less like this. I mean, we have this tendency of nakamma hai, sust hai, kaam nahi karta, but you have no real hope in this country. You're burdened with lectures, you have deadlines, assignments, and then you're thrown into a situation where you're faced by relief. So it's a bad situation, and you'll behave in a certain way in this situation. So इसमें मैं ज़्यादा deliberation में नहीं जाऊँगा, but इतना समझ लें कि there are two types of attributions: situational attribution, dispositional attribution. Performance appraisal में इसका critical role है, ठीक है? Even day-to-day interaction में, don't jump to fundamental attribution error and dispositional attribution. Give the person the due chance. जी. Isn't it a fundamental attribution error in itself that we have this tendency to classify human beings as either good or evil? Because मैं इस एरिया में जाना नहीं चाह रहा, ये थोड़ा थॉर्नी इशू है. हमें बचपन से सिखाया जाता है इस तरह से ना, और इसमें कई चीज़ें हैं जो कि अगर मैंने बोला तो मुझे फायर पड़ेंगे. जी. That is the way we're conditioned. But does it fall into that fundamental attribution error that What? we tend to look at human beings in this way? Yes. And there are two sides. When it comes to yourself, आप situation की तरफ जाते हैं फौरन. Stereotyping का लफ्ज़ कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना? सब नहीं सुना. यार देखो, ये बहुत एडवांस लेवल की जो है ना, इसमें मोरालिटी है, इसमें न्यूरो साइंस है, इसमें FMRI है जो पहले डिस्कस हुई थी. ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं. बट अगर आप इन चीज़ों को लाइमलाइट में ले आएंगे तो आपका पूरा लीगल सिस्टम, एथिकल सिस्टम, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ रही हैं. I just want to ask that if this situation only college background at like is learning at all, do you think that you can put it in this situation? आप जैसे भी आदमी हो ना, if I put you in a bad situation, there's a good chance. इसीलिए मैंने आपको ये मैंने बफर किया था, मैं क्लास में दिखाना चाह रहा था. आप ये जरूर देखा, हमें देखें. आप स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट देखें, उसके बाद जिम्बार्डो की बुक है लूसिफर इफेक्ट, और बल्कि इसके पूरे लेक्चर्स हैं, कोई 20 लेक्चर्स हैं लूसिफर इफेक्ट पे, वो अवेलेबल भी हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाए. तो मैंने उर्दू गुजारा और पता नहीं लाइब्रेरी में ख्वार हो कि ये चीज़ें पढ़ी हैं आप लोग, जैसे हमने और यू कैन एट अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन लिसन टू दीस लेक्चर्स. सो आपको क्लियर हो जाएगा आपको. स्टीरियोटाइपिंग, व्हाट इज स्टीरियोटाइप? It is kind of related to status and roles and categorization. The attributes, very good, very good. So किसी के साथ कुछ attributes, कुछ characteristics किसी के साथ. अब वो किसी कौन है? So now, certain group. What kind of group? Very good. Every group is social group. Very good. Okay. Ethnic group. Social class. Says religious group. Brilliant. Gender. Race is ethnic group. ठीक है. Occupation. Status. And in case of organizations, different departments. Department. Brilliant. Very good. Department. Age to a degree. Yes. Physical attributes. Characters जैसे हम लोग फिल्म में या ड्रामा में शो करते हैं, like villain है, ये हेलो पे आ रहे हैं आप, हेलो पे आ रहे हैं. नेक्स्ट हेलो इफेक्ट.
तुम देवंशी की तरफ ना जाओ। किसकी तरफ नहीं था? देखो, Okay. certain attributes and characteristics, it's different from status and role के जी आपसे इंडिविजुअली मैं आपका स्टेटस रोल देके आपको एक कैटेगरी में डालूंगा, और आपकी जो इनिशियल क्यूज अगर स्टेटस और उसके अलावा अगर आपने कोई अपनी आपकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैन आई यूज यू एज एन एग्जांपल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी एथनिक ओरिजिन, जनरली स्पीकिंग, ओके, आपके रिलीजियस Sentiments. बिलीव्स, रिलीजियस बैकग्राउंड, द ग्रुप, ठीक है, आपकी जॉब से, so इन सब ग्रुपिंग्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर दिए गए हैं, और जैसे ही मैं वो आपसे सुनूंगा तो मैं आपको कहूँगा कि जी आप में भी वो ट्रेट है जो कि सारे ग्रुप में है, ठीक है। सो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आई मीन ऑल ब्लॉन्ड्स आर डम, ठीक है। और या हमारे पंजाब की तरफ कहते हैं कि यार ये जो लाइट आइड या कर्ली हेयर लोग होते हैं, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। नीली आंखों वाले भी सर, ब्लू आइड लाइट आइड वही होती है ना, इट्स अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। छोटे कत्ते बड़े फसादी होते हैं। पठान, need I say more? It's wrong. सिखों के साथ, ठीक है ना, ethnic groups, when I go बाहर, black people, all black people are criminals, हालांकि वो सदर बन गए, हमारा भी तो बना हुआ है। रिलीजियस, आई मीन जो गस्टापो के टाइम में सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा में प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा किया कि ज्यूज, ऑल ज्यूज आर कंस्पिरेसी, इट वाज अ टोटल, when I 2001 when I met the first Jew, मैंने कहा यार लिसन है, तुम्हारे सीन कहाँ है, कहता वो जो सेम यार, मतलब मैंने जो सुना है आप लोग तो जुम्मे की नमाज के बाद होता है ना यार, ये होगी मेरे ये, मैंने कहा यार वो मेरी तरह एक very friendly person, we developed amazing relationship, I used to go to his home, his family, anyhow. So religious stereotypes, we know why. All Muslims are every time at an airport I face this stereotype, ठीक है। Then jobs, all lawyers are sharks and all doctors are blood sucking decade, and all professors are absent-minded, which is not a stereotype in my case, it's true. फिर जब, as she said brilliantly, I mean occupation के अंदर, job के अंदर सब, all HR people are sweet talking, theory wide, blah blah thing, have got nothing to know about the operational constraints. All finance people are cost cutters, number crunching people who are always thinking of bottom line. All R&D people are introverts. They're different from the That is why I hate technology. अच्छा, so clear? Stereotype समझ आ गए? इसमें की लर्निंग पॉइंट्स अगर मैं दो देना चाहूँ, मैं जस्ट की लर्निंग पॉइंट्स दूँ। फर्स्ट, स्टीरियोटाइपिंग में don't do it, it's wrong, every person is unique, okay? I have some amazing Pashtun friends, yes, don't stereotype people, don't do it. Second, don't let yourself be stereotyped. ये जो मैंने इनिशियल क्लूज की बात की, so you go in an organization, let's suppose आप HR की हो, ठीक है, और आप ऑर्गेनाइजेशन की पहली सोशल गैदरिंग में लोग, रिमेंबर द फर्स्ट डेज जो आपको असाइनमेंट दिया, आपको सोशल गैदरिंग में बुलाया जाता है कुछ टॉप, सो ओके जी ये हमारी न्यू इंटर्नी है, शी इज फ्रॉम HR, okay, so there is a tendency that you be stereotyped, so he says, hello sir, I know you must be thinking that I don't know the operational constraints, but I do know the overall organization goals. ये एक impression management है, that you tell the person कि यार मुझे उस बॉक्स में ना डालो, मैं वो नहीं, and I know कि client के अपने issues हैं, हमारे financial हम organization में problem, this will make you go up, ठीक है। आप R&D में हो, so जी ये R&D means I'm R&D, but I'm not an introvert as most people think, in a jocular way, that I meet people, I go out, I'm
So what you've done, you've proactively crushed somebody's attempt to stereotype you. So don't do it, don't stereotype people, and don't let it done to you. Yes? Yes. So that is all I can say about the stereotyping, and then the next is the hello effect. नहीं, हेलो इफेक्ट में है, बड़ा वाली बात अगर कोई होगी ना शाय है और तो वो शाय है, लेकिन अगर आप कहें जी कि चूंकि आप खातून हैं तो इसलिए शाय है, अब आप स्टीरियोटाइप हो। बात स्टीरियोटाइप्स को नेगेट करने का मकसद ये है कि डोंट पुट मी इन अ ब्रॉड ग्रुप कि जी मेरे इस ग्रुप के सारे लोगों में ये है, ओके? आप जैसे बड़े अक्लमंद भी हो सकते हैं, आप कैसा मैं अक्लमंद हूँ इसलिए नहीं कि मैं पठान हूँ, मैं वाकई अक्लमंद, ठीक? So you made an effort. Halo effect is one of the most researched areas, one of the least understood, and one of the most critical. मैंने जो कह रहा हूँ, software glitch in us. Even I fall victim to it. मैं आपको अभी explain करूँगा. One of the, I'm fascinated with this phenomenon. People confuse it with stereotyping. I'm gonna say it once. I want you to listen very carefully. What halo? आप में से किसी ने इससे पहले you heard the term halo effect, horn effect? जी, what is halo effect? जी, halo effect आपने सुना? जी. मैं इस तरह होता है कि सर मतलब एक बात आपके ध्यान में अगर है ना उसको आप जनरलाइज करते हैं सब पे ऐसे ना कि सर हेलो इफेक्ट होता है कि मतलब मुझे कंफर्म नहीं दो तीन चीज़ों में कंफ्यूजन है। एक तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक ग्रुप का जो बिहेवियर होता है उसके इंडिविजुअल का भी बिहेवियर उससे जनरलाइज कर देता है, बेशक उसका अलग हो। People often make. Excuse me, sir. Sir, I guess. जी बोले. Sir, I guess stereotyping is you, like you go from generalization to an individual, and hello effect is you move over individual to generalization. Sir, So for example, we make a perception that every student of Nest Business School is very. That is okay. Stereotyping. excuse me, sir. जी. So in hello effect, it is like the first impression thing that we know only one attribute of a person, and we think that only that one thing. But we generalize, we make other assumptions about that person. We only know that that a person is late. That means that he is also going to perform wrong, and he is also going to be absent a lot of Brilliant. things like that. Hello effect is that you take one characteristic of a person, either positive or negative, and generalize it over all other areas. Very good. तो ये तो डोमिनो इफेक्ट की तरह हो सकता है.